Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and after a huge demand I am here with your session on SEED and UCEED. And in this particular session we are going to discuss about how are you going to prepare for this, what is the detailed syllabus. When I'm saying detailed, I am not only going to discuss what you're getting on Google and other websites. I am literally going to discuss the detailed syllabus in the forms of module 1, module 2 and module 3. So if you are a new student and you are an aspirant for 2024, you are at a very good platform. Do see this whole video completely, and you are going to learn, or you're going to know many important things which no one is going to tell you. So yes, on that note, do subscribe my channel, do share it and do like it, because इतने important sessions आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. So IIT Bombay actually conducts this examination of UCEED and CEED. In fact, crack the first round, you go to the second round, and then finally you enter the IIT. Now IIT where? IIT Jabalpur, IIT Hyderabad, IIT Guwahati and IIT Bombay, which is also called IDC Bombay. So here in all the 4 centers आपको सीड एंड यूसीड क्रैक करने के बाद आप बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग एंड मास्टर्स के लिए पूरे 4 years पढ़ाई करते हो. फॉर बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग इट्स फॉर 4 years एंड फॉर मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग इट्स फॉर 2 years. सो बेसिकली यू गो देयर, आपको IIT का टैग मिलता है. I have already discussed in my previous videos related to NIFT NID, because अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है that is NID and NIFT, and now IIT भी आपके दिमाग में आएगा. Like there are many students who would love to be called an IITian, but they are away from maths and like chemistry, physics, and in चीज़ों से like their focus is not on basic these streams. engineering पे focus नहीं होगा, but they do want to explore their like career in creative field. So yes, IIT is for you. You are not only going to get the tag of IITian, but yes, you will be getting the bachelor's in design category too. So let's move on further. There are 2 parts in which you give your exam. The first part is part A and the second part is part B. Part A is for the aptitude part, which is in common terms we can say GAT, general ability test part, and part B is given to your creative part. And again the 60 marks is given for your creative part, जहाँ पे आप literally draw करोगे and you are going to submit your sheets. So these are the 2 parts, part A and part B. Now इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको समझाने वाली हूँ that how this 240 marks, what type of question you get in this 240 marks, and what is the division of the marks. So this 240 marks of your exam of part A will be conducted on computer, so CBT form में होगा, and the 3 categories of this 240 marks would be, first one would be NAT, numerical answer type. Here you are going to get 18 questions which will be of 4 marks each, and there are no negative marks on that. Second category which you get is your multiple select question. Again there will be 18 questions in this category, 4 marks each, but there will be a negative marks on that, 0.19. हर एक गलत आंसर जो आप दोगे उस पे 0.19 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. Now there comes the third category, which is your multiple choice questions, and here you are going to get 32 questions of 3 marks each, and your
negative marks here on this very category would be 0.71. हर एक गलत आंसर पे 0.71 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. सो इन टोटल देर आर 240 मार्क्स जिसके बेसिस पे आपका पार्ट ए इवेल्युएट होता है. नाउ बिफोर मूविंग टू पार्ट 2 एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर ड्राइंग पार्ट, लेट मी कम टू द पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट what is the detailed syllabus. Like सबने गूगल आउट किया होगा एंड देर आर 5 कैटेगरीज जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर यूसीड. won't be any channel or there won't be anyone who would be telling you the detailed syllabus under these categories. So I am going to come with that. So what I have done, that I have divided this whole UCEED syllabus in 3 modules. Let's talk about module 1, and under module 1 you are going to study these very topics: visualization and spatial ability. Number 1, counting of figures. Number 2, 2D and 3D shape perception. Number 3, counting of cubes. Number 4, counting of edges and surfaces. Number 5, orthographic views. Number 6, platonic solids. Number 7, spot the difference. Number 8, cross sections of 2D and 3D shapes. Number 9, water and mirror images. So now these are the topics which you get under visualization and spatial ability. And the contents which I have just said, do study from these very topics, and what you will come across that you have covered almost 70% of the UCEED syllabus. Because जो भी questions past 3 years में, 4 years में, 5 years में आए हैं, they have come from these very topics. And how confidently I can say that, because I have prepared my study material on based of the like all the past years question papers. तो उसके basis पे ये पूरा का पूरा module prepare किया हुआ है, which I would like love to share with you all. So this is module 1 which I have just discussed with you, and similarly you have got module 2 and your topic is observation and design sensitivity. Here you are going to study about planned and elevation of objects, evaluation of product and objects, photography, skin and textures, identification of musical instruments, animation movement, working geometrical objects, unfolded and folded views, and also hidden words and objects. तो यहाँ से आपके questions आ चुके हैं. For example अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 second. Like this is evolution of cameras and computers. तो इसके basis पे भी आपके questions आ चुके हैं past to past years में. And the questions are related to your previous year questions based on what is the function of these objects: measuring earthquake, weaving cotton, toasting bread, burning wood. ऐसे आपको images दे दिए जाएंगे, and from there you would be asked कि ये किस पर्पस के लिए है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं. दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर knowledge and observation skills. So that's why this module has been prepared keeping in mind all the previous year questions. Similarly, the question here, the picture shows a man holding this very picture, this shows a man holding a traditional product in his hand. What is it used for? Number A, separate rice from husk. Number 2, catch fish in shallow water. Number C, separate tea leaves from dust and foreign particles. D, separate gravel from sand. तो इस टाइप के आपके questions आ सकते हैं, आपको screen पे दिख रहा होगा. So keeping in mind all these topics, this module has been prepared. You can study on the topics which I have just mentioned for module 2. So this is the detailed topic of UCEED if you are going to appear for this exam. Now let's talk about the module 3, and here the topics are design thinking and problem solving, visual analogies. Number 2, science, symbols and metaphors. Number 3, brain teasers. Number 4, puzzles. Number 5, mechanical concepts. Number 6, data interpretation.
Number 7, miscellaneous questions. So along with these topics which I have just now mentioned, you are also going to study the volume and surface area topic, which is from mathematics, because यहाँ से बहुत सारे questions आते हैं. And along with that, if you are not practicing comprehensions, do practice them, because not previous but this year 2023 में there were 2 comprehensions and they were very like लेंदी कॉम्प्रीहेंशंस जो आपको पढ़ करके आंसर करना था. सो कॉम्प्रीहेंशंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन एनी एंट्रेंस एग्जाम, नॉट ओनली डिज़ाइन, सो दैट यू हैव टू गो थ्रू. So yes, this was all about the UCEED Part A syllabus, which is of 240 marks. And let me tell you one more thing, the modules which has been prepared, module 1 and 2, we have kept in mind the seed syllabus too. So ये जो topics हैं ये आपके seed में भी काम आएंगे. So the topics are going to be similar for seed, but the part B is a little bit different from like UCEED, so that I will be discussing later. So let's discuss about part B of your UCEED examination, which usually comes of 60 marks. And here the most common question which you come across is from memory drawing, compositions, situational drawing, perspective 1, 2 or it may be 3. Many times in the question it is written that do that very scene in 2-point perspective or 3-point perspective, and many times you are only given with the situations, and then you are going to solve that situation from your point of view, maybe in 1 point or 2 point or 3 point or none of these, and in the form of compositions. ठीक है. सो दिस इज फ्रॉम वेयर दीज आर द टॉपिक्स जो कॉमनली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देर आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम पोस्टर्स, देर आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम कलर साइकोलॉजी और कलर थ्योरी. सो बेसिकली थोड़ा सा सिलेबस पार्ट बी का कम है कंपैरेटिवली seed. So yes, this was all about your UCEED part B, and if I'm not missing, see, there are elements of design, principles of design, art history or logo design topics. These are some of the common topics. Even if you are even if like these topics नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, बट स्टिल यू नेवर नो द अपकमिंग पैटर्न और द अपकमिंग क्वेश्चन विच यू विल बी आस्क्ड. तो हमें इन सारे टॉपिक्स पे भी तैयार रहना चाहिए, एंड इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग विच यू मस्ट नो एज अ अपकमिंग डिज़ाइनर. जो आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए all the principles and the elements of design. So yes, आप initiate और initial preparation इन topic से शुरू कर सकते हो, and then you can end up in doing compositions and your memory drawing or perspective. So that's all for your UCEED part B. इस पे 60 marks होते हैं. Now there are some important facts which I would love to share it with you, and that is like when the results come and your part B, you like from into 240 marks, अगर आपके above 70 आए हैं, above 80 आए हैं, like in general category, तो 70 और 80 आपका main general का cut off जाता है, but 70 and 80 are not good marks. So अगर आपने 150 above 180 above score किया है, then there are good chances कि आप फर्स्ट राउंड क्रैक कर सकते हो. नाउ देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड दैट इज़ कि जब तक पार्ट ए के क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं आते हैं, आपका पार्ट बी जज किया ही नहीं जाएगा. येस, दैट इज़ द फैक्ट. पार्ट बी, विच इज़ द ड्राइंग पार्ट, दैट विल ओनली बी जज्ड आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड फॉर योर पार्ट ए. मतलब आप जो कट ऑफ होने वाला है पार्ट ए का अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, लाइक अगर 70 मार्क्स तक का कट ऑफ है कि यहाँ तक तो आपको अचीव करना ही है, अगर आपने 65 अचीव किया या 68 अचीव किया तो 2 मार्क्स से आप रह गए, तो उस केस में पार्ट बी की जजमेंट नहीं होगी. सो ये ध्यान में रखना है इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर योर यूसीड एग्ज़ाम कि आपका गैट का पार्ट, एप्टीट्यूड का पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली यू विल बी जज्ड फॉर पार्ट बी. नाउ इफ़ you have qualified your part A and you're being judged on part B, जो पूरा रिजल्ट आता है, the final result is based on
30% वेटेज ओनली फॉर पार्ट ए एंड 70% वेटेज ऑन पार्ट बी. अगर आप पार्ट बी आपका चेक हो रहा है क्योंकि आपने पार्ट ए कर लिया था, देन 70% वेटेज आपके वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन पे दी जाएगी इंस्टेड की वो 240 मार्क्स का गैट पे जो आपने अचीव किया है. सो दैट्स ऑल फॉर UCEED part. Now let's move on to your CEED part. Usually the topics which I have just mentioned for your UCEED, that is going to be same for your CEED also, but let me discuss the part B of CEED, which is super important for you, and let me also discuss the pattern of your CEED examination now. Now the exam is conducted for 2 hours and 1 hour is given to your GAT portion, which is the aptitude part, and 1 hour is given for your part B portion. Part B, usually यहाँ पे there are 5 questions which are being asked, and 5 questions, each question is of 20 marks, and that's why the whole part B is of 100 marks, and the weightage is also सेम. लाइक यहाँ पे अगर आप पार्ट ए क्रैक कर लेते हो देन ओनली यू विल बी इवेल्युएटेड फॉर पार्ट बी, एंड अगर आपने पार्ट बी भी अच्छा किया है देन 70% वेटेज आपको पार्ट बी की मिलेगी एंड 30% वेटेज आपको पार्ट ए का मिलेगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन, लाइक व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए. लाइक इन UCEED अभी हमने डिस्कस किया था there are 18 questions of NAT, 18 questions of MSQ, and there are 32 questions of MCQ, but यहाँ पे CEED में फाइनली अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये 8 आते हैं, 8 जो कि 24 मार्क्स के होते हैं. MSQ क्वेश्चंस आपके 10 आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, एंड MCQ क्वेश्चंस आपके 23 आते हैं जो कि 46 मार्क्स के होते हैं. सो टोटली आपका ये 100 मार्क्स का हो जाता है. एंड देन पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा. सो लेट मी टेल यू फ्रॉम वेयर दीज 5 क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम. दे डू कम फ्रॉम योर फॉर्म एंड विजुअल सेंसिटिविटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से हो सकता है, स्केचिंग एंड रेंडरिंग का हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस का हो सकता है, कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी का हो सकता है, पर्सपेक्टिव का हो सकता है. सो दीज आर द मेजर एरियाज जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, द 5 क्वेश्चंस. एंड अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम कॉमिक स्ट्रिप्स ऑल्सो. सो इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट कि यू विल बी शोन सम विजुअल्स एंड फ्रॉम देयर यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ समथिंग. नाउ फॉर दैट you will be provided with the sheets. जो ये क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंप्यूटर पे दिख रहे होंगे एंड आप उसको ड्रॉ कर रहे होंगे. सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन UCEED and CEED के questions. So if you are a new student or a new subscriber to my channel, and if you're appearing for going to appear in 2024, this video is for you. And do comment if you have any queries. Also if you want, you can come and join me for online and offline classes. Offline we are based in Delhi, and online across India we are having our classes in 3 different batches, 3 different timings. The weekend batches there, evening batches there, and the regular batches there. So yes, you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. So that's all for today. I hope this video was informative, and you can let me know from your valuable comments. Till then, take care. Bye bye.